हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन प्रॉस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस इज डिनोटेड बाय। आपको बताना है कि यहाँ पे एवरेज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस डिनोटेड बाय किससे डिनोटेड होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, व्हाट इज द राइट आंसर इज ए। दिस इज द राइट आंसर, यानी एवरेज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस डिनोट करेंगे 1/न्यू, दैट इज डेल्टा न्यू अपॉन डेल्टा टी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ अ सब्सटेंस इज डिनोटेड बाय। अब यहाँ पे हमें बताना है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ अ सब्सटेंस किस तरह से इसको डिनोट करेंगे। दैट इज ई माइनस न्यू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, सफिक्स में टी, दैट इज यहाँ पे टी टेम्परेचर जाएगा और कैपिटल टी हमारा यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ -150 डिग्री सेल्सियस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज गैस थर्मोमीटर। राइट आंसर इज सी, दैट इज गैस थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द टू गैसेस suddenly mix up with each other, then resultant entropy of the system will be is B, that is increases. Next question, if hot water and cold water are mixed, then the entropy of the system will be, राइट आंसर इज इंक्रीज। अगर हम हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को मिक्स कर देंगे तो इंट्रॉपी जो होगी वो हमारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हेन a process undergoes a complete cycle, then the change of entropy will be, the right answer is C, that is zero value. Next question, if air is compressed adiabatically from atmospheric condition in a cylinder having compression ratio of 6, then pressure at the end of compression shall be, the right answer is C, that is more than 6 atA. Next question, a process which undergoes energy losses due to friction is called, right answer is D, that is irreversible process. A process which undergoes energy losses due to friction is called, right answer is the irreversible process. Next question is, which of the following is a extensive property? The right answer is E. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हमारा आ जाएगा एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 309 का, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ई, दैट इज योर डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू फॉर अ प्रोसेस इज इक्वल टू, द राइट आंसर इज सी, दैट इज 0. Next question is delta Q minus delta W for ideal gases is, right answer is question 3.1.5. इसमें पूछ रहा है कि हमें बताना है गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप। गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि G बराबर होता है H माइनस टी एस, इज द राइट आंसर। जब यहाँ पूछा जा रहा है कि हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का रिलेशनशिप, जब हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का रिलेशनशिप बात की जाएगी तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, इसमें एफ बराबर यू माइनस टी एस होगा। गिब्स फंक्शन के लिए जी बराबर एच माइनस टी एस हो जाएगा और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के लिए यू माइनस टी एस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि इफ़ M1 M2 M3 भी द मॉलिकुलर वेट हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस के, और M1 M2 M3 देयर करस्पॉन्डिंग मास फ्रैक्शंस हैं, देन द मॉलिकुलर वेट M of the mixture is equal to, इसका राइट आंसर हो जाएगा E. राइट आंसर इज E, दैट इज 1 अपॉन स्मॉल m1 अपॉन कैपिटल M1 प्लस M2 अपॉन कैपिटल M2, M3 अपॉन कैपिटल M3. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू गैसेस with their molecular weight 28 and 44 expand at a constant pressure through the same temperature range. The ratio of quantity of work done by the two gases is B, 11:7. Next question is
how much mass of oxygen is required to convert 1 kg of carbon into 11 upon 3 kg of CO2? Right answer is D, 8 by 3 kg. Next question is, work done in compressing 1 kg of a gas adiabatically from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 is equal to. The right answer is A, CV T2 minus T1. Next question is, work is considered to be a superior form of energy as compared to heat energy causes. The right answer is C, that is, while work can be fully converted into heat and heat cannot be fully converted into work. Then right answer is, triple point of a pure substance is a point at which. The right answer is D, solid, liquid and vapor phase exist together. Next question, a substance above critical existence exist is a substance above critical temperature exist is. Right answer is E, that is your supersaturated fluid. Next question, triple point of a pure substance on PV diagram is represented by. The right answer is B, that is your line diagram. Next question, triple point temperature and pressure for water are. The right answer is E, that is 0.01 degree Celsius and 0.006028 ATA. Next question is, pick up the correct relationship for the following. Is A, that is TDS, that is TDS is equal to DH minus V dP. Next question, 1 kilowatt hour of energy is equal to 1 kilowatt hour की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज सी, दैट इज 3600 जूल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी की यहाँ पर आपको यूनिट बतानी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पावर. पावर की यूनिट आपको बतानी है. But the right answer is B, watt. Which of the following is the unit of entropy? Is a very important question. Entropy की unit क्या होगी? But the right answer is A, that in joule per kg Kelvin. ठीक है. Next question. Which of the following is the unit of universal gas constant? Is C, that is Newton meter kg per degree Kelvin. Next question. Pick up the correct statement for the following. What is the correct statement? कि अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा? दैट इज डी, यानी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई इफिशियंसी ऑल इंजन्स आर डिजाइंड एज रिवर्सिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ it is not possible to liquefy hydrogen at room temperature by application of pressure because. What is the right answer is, क्या होगा इसका राइट आंसर इज ए, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिक्विफाई हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर तो बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर बिकॉज, क्योंकि इट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ लोअर देन द रूम टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात करते हैं यहाँ पर, ऑल गैसेस बिहेव आइडली अंडर. ऑल गैसेस बिहेव आइडली अंडर. राइट आंसर इज बी, दैट इज़ लो प्रेशर कंडीशन पर बिहेव करेंगी ऑल गैसेस आइडली अंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. राइट आंसर इज बी, दैट इज ऑटो साइकिल इज मोर efficient देन डीजल साइकिल फॉर अ गिवन कंप्रेशन. RMS velocity of hydrogen gas at NTP is. Right answer is E, 1839 meter per second. Next question is, molecules is defined as. Molecules is defined as is C, that is smallest quantity of a substance which can exist by itself in a chemically recognized form. Next question is, atom is defined is the B, element made up of minute and chemically indivisible particles. Next question is, element is defined as the. Answer is A, that is substance which
has not been resolved into simpler form. Next question. Work done during a process can be determined by integration of PDV when the process is. The right answer is E, quasi-static process. Next question. During a process on the closed system, its internal energy increases by twice the units that heat added to it. It is possible due to. The right answer is D, that is your performing of soft work on the system. Question is that a gas is formed by a mixing equal masses of oxygen and nitrogen gas, and the ratio of nitrogen and oxygen by volume will be. Right answer is 32 by 20. The next question is partial pressure of a component in a mixture is. Partial pressure of a component is a mixture is. The right answer is D, that is your pressure of the component itself. It was present in the entire volume at the same temperature. The next question is the sublimation curve PT diagram for all substance possess the following slope. What is the right answer is C, that is your positive. बात करें यहाँ पे sublimation curve on PT diagram for all the substance possess the following slope is positive. The next question is sublimation is the process of. The right answer is A, that is your changing from solid state to direct gas state. Changing from solid state to direct gas. The process of sublimation is found to occur in the case of. The right answer is B, that is solid carbon dioxide. Next question, vaporization curve on PT diagram for all the substance possess the following slope. The right answer is C, that is your positive. Next question is the fusion curve on PT diagram for all the substance possess the following slope. What is the right answer? It's E, that is variable. Fusion curve on PT diagram for all the substance possess the following slope is variable. Next question. In a cyclic process, the net heat supplied is 70 kJ per second and the work obtained from the cycle is equal to. What is the right answer? Is D. Right answer is D, that is 70 kJ per second. Next question की तरफ बढ़ते हैं. 1 meter cube of methane combined with 2 meter cube of oxygen and would be produce a carbon dioxide and H2O in a following quantity. बताना है क्या है क्वांटिटी. इसके राइट आपको आंसर हो जाएगा कि 1 मीटर क्यूब एंड 2 मीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड. आपको बताना है कि इसमें कौन सा कंपाउंड है. व्हाट इज द राइट आंसर इज कंपाउंड इज वाटर. हमारा क्या है यहाँ पर एज अ कंपाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन अ वेपर कंडेंस इनटू अ लिक्विड. राइट आंसर इज सी, इट्स evolves heat. Next question. A closed system receives 50 kilojoule heat, but the internal energy of the system decreased by 25 kilojoule. The work done by the system would be. क्या होगा इसका राइट आंसर इज ए, दैट इज 75 kg. यहाँ पर क्योंकि बात की जा रही है वर्क डन बाय द सिस्टम वुड बी, तो यहाँ पर 50 kg एंड 25 kg, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 75 किलो जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम इज फाउंड टू अंडरगो चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी बाय 50 किलोजूल वेयर इज इट रिसीव्ड ओनली 25 किलोजूल ऑफ हीट. सच अ सिचुएशन इज. द राइट आंसर इज ए, दैट इज possible. A constant volume closed system is found to undergo change in its internal energy by 50 kg where it is received only 25 kilojoule of heat. Such a situation is possible. Next question. A reversible engine working between the temperature limits of 600 Kelvin and 1200 Kelvin receives 50 kilojoule of heat and the work done by the engine will be. The right answer is C, that is your 25 kilojoule. The next question is 1 kg of a gas is compressed adiabatically from 1 kg per centimeter square 1 meter cube volume and 300 Kelvin to be 5 kg per centimeter square 0.50 meter cube volume and 400 Kelvin. Work transfer is the process will be.
The right answer is B is 70.1 kilo. The specific heat of at constant volume and constant pressure for air are 711 joule per kg degree Kelvin respectively. The right answer हो जाएगा यहाँ पर 289 joule per kg Kelvin, and 1 kg of carbon produces following quantities of CO2. The right answer is C. Next question. 1 kg carbon would produce following percentage of CO2 in flue gases. The right answer is D. इसका हो जाएगा 29% flue gases. Next question. 1 kg of carbon produce following quantity of CO2. The right answer is E, that is 3 by 11 kg. Next question. Sometimes ice is white in color. It is due to. The right answer is D, that is presence of dissolved air slash gases at impurities. Next question. The ratio of air required for complete combustion of carbon to carbon monoxide as compared to that required for combustion to carbon monoxide is. The right answer is B, that is 2:1. Next question is, bomb calorimeter is used to measure the calorific value of. The right answer is D, that is a solid or liquid fuel. Next question is, which of the following gases possess maximum heat content at 100 degrees Celsius? The right answer is E, C2H2. Next question is, the following is concerned with the combustion of gaseous fuels. Options are Avogadro's hypothesis, Kirchhoff's laws, Dalton's law, Mendeleev's periodic tables, and Charles law. Right answer क्या हो जाएगा? That is your A, that is Avogadro's hypothesis. Next question, the area under a curve TS diagram represent. Right answer is C, that is heat transfer during the reversible process. Next question is, submerged combustion involves. Right answer is A, that is combustion inside the liquid medium. Combustion inside the liquid medium. Next question is, all the commercial liquid fuels are derived from. The right answer is B, that is crude oil. Next question is, specific fuel consumption is defined as. The right answer is D, that is fuel consumption per hour per bhp. Next question, the flameless combustion means. Right answer is C, that is your catalytic combustion. Thanks for watching and sharing.